अभिजित्य भगवान बोलने तया नस्तवासंतमया गिरिसंता विजागति या विदर्भिजसंतगन्ते भगवान श्री पुरुषं जगदे धीरे नवचनात्मा गिरिनात्मावनामधि जगदे शुभनामसते अभ्योदे देवृक्कां नमो देव्यो दधे अहेशं धर्मान् दम्भयं धर्मास्त्यात् धान्यः अदो व्यस्ताम्बुरो अर्णवः ये देवानुपुत्रा विदो विष्णुपतिलीलहरि गोपियोगिनः कैनं गोपादगन्धतगन्धतार्यः कैनं दिवा भूतानि तत्सोमयातः नमो समेलक्ष्मी ओम अस्त्रेण उपविश्य சின்ன பழைய போட்டு மாலை போட்டு எடுங்க பழைய எடுங்க ஆமாம் அது பழைய பழைய அந்த பழைய ரெண்டு பழைய தான் தான் அத்தனை ரெண்டு இருக்கக்கூடாது அந்த பழைய இது வைங்க ஓம் நிவைஷ்யாசனம் சாத்திய ஓம் அனந்தாய நமஹ ஞானாய நமஹ ஞானாய நமஹ வைராஜ்யாய நமஹ ஐஸ்வர்யாய நமஹ ஓம் பத்மாய நமஹ ஓம் அமுதேஸ்வராசனாய நமஹ கிருத்திகா ரோகிணி சமேத அமுதேஸ்வரமூர்த்தயே நமஹ சேதவர்ணம் துவிநேத்ரஞ்ச சேதவர்ணம் श्वेतवर्णं द्विनेत्रं श्वेतवर्णं द्विनेत्रं द्विभुजं कुमुदोपेदं श्वेतवस्त्रेण वेष्टितं क्रीडमकुटोपेदं प्रभामण्डलमण्डितं रोहिणीमण्डलमन्त्यात्माविन्यसमुपत्यते ॐ कृत्तिका सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मण्यं तदादु साधिन्यं पितश्रवणं ज्योतिषादस्मै ॐ महाकृत्तिकारुणमूर्तिये नमः इति सावैध्वावाह्यामि ॐ कृत्तिका रोहिणी समेत अमुदेश्वराय ओम औषधे सहुं वदन्ते सोमेन सगराज्ञाः यस्मै करोति ब्राह्मणे वसुदेवस्माभिजापुरादे यदिक्षेभ्यः कुम्भसुज्यानञ्च मुत्सङ्ग्रहेण सम्प्रोच्य सोमसुम्बं सेचनं कृत्वा पुनरावृत्य जलमावृत्य पंचभूते
महानन्दते सिंहराजकुमार नामधेयस्य भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति नक्षत्राणाम् अपामायतनम् आयतनवान् भवति यज्ञोमपामायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरोमपामायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यो महामहावं प्रविष्टयां वेद प्रत्येवतिष्ठते नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः दन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम सागरोर्मध्ये गन्धमादनपर्वते भास्करक्षेत्रे सोल्लिपदि नामाङ्कित सुन्दरशिबिर पुण्यस्थले विराजमानस्य स देवदेवस्याः अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्ड नायकी महासुन्दरी राजराजेश्वर्यम्बिका देव्याः आलयस्य सोमकृतवर्ष ब्रह्मोत्सव पूर्वाङ्ग प्रथमसायङ्काल वसन्तमण्डपेन वल्लभाम्बासमेत श्री विघ्नेश्वरस्य विधिप्रकारकाल वसन्तमण्डपे पूजाकाले ओंकार प्रणवाल स्वरूपणायाः मूलाधार सुष्टानमणिपुराज्ञविसिद्धिनिलयायाः पार्वती परमेश्वर ज्येष्ठकुमारायाः श्री वल्लभाम्ब सिद्धि विघ्नेश्वर प्रभो विशेष पूजा समाप्तकाल सर्वे आचार्यः मनसा भक्त्या पुष्पाञ्जलिं भासौ सत्तस्थाने ओम भौलीवल समायुक्तं नामवलि गणेशं सत्त्वानि महान् नैवेद्यं निवेदयामि अमृतपानीयं समर्पयामि सन्तोषेज्ञायः किमोर्यञ्च सूर्यकृत्य ओम सप्तदलाराज्यनिलये ओम महास्वादिष्टानः मणिपुराज्ञविसिद्धिनिलयायाः एकीकृत्य मिन्द्रना सुषुम्नानावाडी विसिद्ध्येन सर्वगच्छनादे जग पूर्वगुड्डनम्बार्चनविद्यानवाभाग्यामि आभागन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन निर्बन्धन अबुण्डन धेनुपद्मदूल प्रत्यमान पंचमी श्वेतकृपयाः ओम सर्वस्याप्यै सर्वमेव देहाप्रोदि राजाधिराजाय प्रसैकसायिने नमो वै श्रवणाय गुरुवे समे कामान् कामकामाय मह्यम् आगेश्वरो वै प्रणोदनात् कुबेराय वै शरणाय महाराजाय नमः महागणपति प्रभो सन्तोष्य वसन्तमण्डपस्थारोहण समये विशेष पूजा समाप्तकाले सप्तदल आज्य आराध्यदीपं समर्पयामि सर्वं गणार्पणमस्तु भक्तजनानां द्वादशमे षोडशमे विकं चतुष्टमे चतुर्विकं दशमे अष्टाविकं दशमे द्वात्रिकं दशमे षट्विकं दशमे चत्वारिकं दशमे चतुश्चत्वारिकं दशमे अष्टाचत्वारिकं दशमे पादश्च प्रथमश्च सुवस्तमूर्धाभ्याग्निश्चान्त्यश्च यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च हरि ओम महाविघ्नेश्वर प्रीत्यानहिंच सोसरमोदार्यहाम् हरि ओम मुदागरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावदंसकं विलासिलोकरक्षकं अनायकैकनायकं विलासिदेवदैत्यकं नदासुपासुनाशकं नमामिदं विनायकम् नदेदरादिदीविकरं न बोधिदार्कभास्वरं नमस्तुरारि निर्जरं नदादिकाभदुत्तरं सुरेश्वरं निधीश्वरं खजेश्वरं गणेश्वरं मगेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकसङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोदरं परं परेवमग्रवक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं जजस्कृतं मनस्कृतं नमस्कृतां नमस्करामि भास्वरम् अकिञ्चनादिभीषणं सिरन्दनोदिभाषणं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारि सर्वकन्दनम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कबोदलादवारणं भजे पुराणवारणं निदान्तकान्तदन्तकान्ति मन्दकान्तकात्मजं वसिन्ध्यरूपमन्तकीन मृदन्तयाय कृदन्तरम्
महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वरं प्रजल्पति प्रजापदे कृगदिस्मदेश्वरम् अरोगदामदोषदां सुरागिगीं सुपुत्रदां समायुरायि अष्टभूरि अभ्युवै विशोषिरादरि ॐ महद्यो नमः स्वस्ति मन्त्रार्था सद्या सबलाः शान्तुनि भवन्तु சதுர்வித பலபுருஷாத்யர்த்தம் ஸ்ரீ வல்லபாம்பா சமேத விக்னேஸ்வரஸ்ய அவர்ஷே வருஷே உற்சவங்கிரி கிருபாகராட் சித்திஜ்ய பூயாசிருபந்தோ மகாந்தோ நிர்ணந்து சர்வே ஜனஹ சுகினோ பவந்து சமஸ்த சன்மங்களானுசந்து அயம் மிகு செய்வத்துறை விளங்க பூத பரம்பரை பொலிய புனிதமாய் மலர்ந்து அழுத சீதமள வயல் புகழி திருஞான சம்பந்தர் பாதமலர் தலை கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுவார் கணபதோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெற்றி குருசை தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செல்வர் எறிய மஞ்சை வாழ்க யானைதன் நனங்கு வாழ்க மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியாரெல்லாம் மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க அழகனுடைய சிவனே போற்றி ஸ்ரீ சித்தி விநாயக பெருமானுக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஜெய் ஆதிபராசக்தி ராஜராஜேஸ்வரி மாதாஜி கணேஷ் सत्यप्रजाभ्यः परिपालयन्तां मार्गेण महिमयेषाः गोभूषणेभ्यः नित्यं लोहाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु शान्तो भव अभिमुखो भव श्रीवल्लभाम्बा समेत विघ्नेश्वरस्य नित्य अनुग्रहो भव
अभिषिच्य फलाम्बुलनि तयानस्तनुवासन्तमया गिरिसन्ताभिजागधीः याविरविजलसन्दगन्धे पिबधन्ते श्रीपुरुषं जगदे दिनेन वचना गिरिधात्कावदामधे यानस्तर्ममिजगदे शुभनामसते अभ्योदिदेवकां नमो देव्योपदने अहेतुर्धर्मान् सर्वास्कयातु धान्यः अदो व्यस्ताम्बुरो अर्णवः ये देवानुरुद्रा हरिवो दिव्यवदिनीलहरिवोऽपियोगिनः दैनं गोपादुरन्नतुरन्नुतकार्यः दैनं दिवा भूतानि तत्सोमयानः नमो सुनीलक्ष्मी ओम अस्त्रेण संप्रोक्ष उपविश्य சின்ன பழைய போட்டு மாலை போட்டு எடுங்க பழைய எடுக்கும் ஆமாம் அது பழைய பழைய அந்த பழைய வச்சு வச்சா ரெண்டு பழைய தான் இருந்தா அத்தனை ரெண்டு இருக்கக்கூடாது அந்த பழைய இதை வைங்க ஓம் விவைஷ்யாசனம் சாத்திய ओम अनंताय नमः ज्ञानाय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः ओम अमुदेश्वरासनाय नमः कृत्तिका रोगिणी समेत अमुदेश्वरमूर्तये नमः श्वेतवर्णं द्विनेत्रञ्च श्वेतवर्णं दुनेत्रञ्च द्विभुजं श्वेतवर्णं द्विनेत्रञ्च श्वेतवर्णं द्विनेत्रञ्च द्विभुजं कुमुदोपेदं श्वेतवस्त्रेण वेष्टितं क्रीडमकुटोपेदं प्रभामण्डलमण्डितं ओम कृत्तिका सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मण्यं तदादु साधिन्यं श्रवणं ज्योतिषा तस्मै ओं महाकृत्तिकारुणमूर्तये नमः इति सावैध्वावाह्यामि ओम कृत्तिका रोहिणी समेत अमुदेश्वराय शुभमुहूर्तो बीजाभावनं कृत्वा ओम ओषधीय सहुं वदन्ते सोमेन सकराज्ञाः यस्मै करोति ब्राह्मणे वसुदेवस्माभिजापुरादि ईदृक्षेभ्यः कुम्भसूर्यान् च मृत्सङ्ग्रहेण सम्प्रोच्य सोमशुम्भं सेचनं कृत्वा पुनरावृत्य जलमावृत्य पूरयित्वा
CapCut is a free mobile video editing app available on Android and iOS, and I'm going to teach you everything you need to know in this many minutes. I don't actually know how many minutes because I've not edited this video yet, which means there's no time to waste, so let's crack on. Stuart Carroll here, pleasure to talk to you as always. This is the first in a series of videos that we are doing working alongside the creators of CapCut. They are in fact the people that brought you TikTok. I have been very impressed, A, that this application is free, there's no pop-up ads, there's no in-app purchases, it's a clean piece of software and it has tremendous depth. There's things in here that you can do that you can't do on Final Cut Pro, so it's been a bit of a revelation for me and I'm keen to show you some of those features now. Inside CapCut we have the option of opening a previous project or starting a new project. Now I know it might sound a bit boring, but good media management really helps when it comes to video editing, and you can do yourself a lot of favours here by organising the clips that you expect to use in your edit into a separate CapCut folder within your phone. Here you can see I've got a whole bunch of videos, some work stuff, some family stuff. It's going to be a little bit difficult to work our way through that. So click on that little drop down arrow next to Recents, and there you can see we've got a CapCut album where I've curated 5 clips that I want to use for this project. We can select all of these clips, 1, 2, 3, 4, 5, and then if we hit add, we'll drop them down onto our timeline. Now, a little tip I've got for you here as well is rather than do that, see if you can do a rough edit at this stage. We're editing on a mobile phone or a tablet. We don't have big computer screens. So editing on the timeline is not the best place for chopping down our clips if we can avoid it. If we look at the second clip that's 1 minute and 3 seconds long, rather than tap on the circle, we'll tap on the clip itself and we have the option of trimming this clip. So let's hit the trim button, and as you... Let me tell you a secret. I use it far too long to produce over 2,000 videos. Get unlimited downloads of over 11 million... And as you can see at present we have 62.9 seconds selected. We don't want that, so let's drag in from the side to the starting point of a nice reveal. And let's drag in from the right hand side to the end point of that clip. That's going to save us a lot of scrolling and scrubbing on our little screen when we've got more than one clip on our timeline. So let's tick for that one. Okay, and as you can see, we've got a little scissors icon there showing that we've already edited down that clip. I know you'll be desperate to fling all your clips into the timeline and start adding effects and color grading, but honestly, this is editing. This is going to save you a lot of time and you'll get a lot more out of the app if you can be a little bit organized with your media management. So I'm going to go through the other 4 clips, select the selects, and we'll be back in a second. Fantastic, 5 curated clips, partially pre-edited before we've even hit the timeline, and we can go one better, we can even select the order that we're going to drop these down into the timeline now. Now don't worry, you can change all of this once you're into the app proper, but it gives us a good starting point. So let's start with revealing the city. That's going to be our first shot, so we'll hit that, number 1, and let's go in the following order, 2, 3, 4, and do you know what? I think we will finish with the flags, and there you can see at the bottom of the screen, 1, 2, 3, 4, 5 clips. You can hit those little crosses if you want to delete them, but let's add them all, add 5. Bingo, welcome to CapCut, and we already almost have a video edited. Well, not quite, but we've got the foundation to then work on all the cool creative stuff and really make this an engaging little clip. Samastaloka sangaram nirasta daidya kunjaram daredarodaram baram bareva makravaksharam kripagaram shamagaram mudagaram jajaskridam manaskridam namaskridam namaskarami baswaram ahinjanadi bhisanam sirendanodi bhajanam purari purvanandanam surari sarvakandanam Prapanjanasa Bhishanam Dhananjayadi Bhushanam Kabodalada Varanam Bhaje Purana Varanam Nidanda Gandha Danda Gandhi Mandagandha Kadmajam Vasindya Rupa Mantakina Mugrinandaya Yagrinandaram
महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वरं प्रजल्पति प्रजापदे कृगदिस्मधेश्वरम् अरोगदामदोषदां सुरागिगीं सुपुत्रदां समायुरायि अष्टभूरि अभ्युवै विशोषिरादरि ॐ महद्यो नमः स्वस्ति मन्त्रार्था सद्या सबलाः सद्गर्भिता फलपुरुषार्थ्यर्थं श्रीवल्लभाम्ब समेत विघ्नेश्वरस्य वर्षे वर्षे उत्सवेङ्गिति कृपाकराक्षिद्य भूयासृतमन्तो महान्तो न गृह्णन्ते सर्वे जनाः सुखिनो भवन्ति समस्तसन्मङ्गलानि सन्ति अयं மிகு செய்வத்துறை விளங்க பூத பரம்பரை பொலிய புனிதமாய் மலர்ந்து அழுத சீதமல வயல் புகழி திருஞான சம்பந்தர் பாதமலர் தலை கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுவார் கணபந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெப்பை குருசை தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செல்வர் எறிய மஞ்சை வாழ்க யானைதன் நனங்கு வாழ்க மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியாரெல்லாம் மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சிவனே போற்றி சித்தி விநாயகப் பெருமானுக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஜெய் ஆதிபராசக்தி ராஜராஜேஸ்வரி மாதாஜி Before we go any further, let's make sure we have the project parameters set up correctly. Currently it says 1080p. Now these were all actually 4K clips, so let's go for maximum resolution and slide that up to 4K. More importantly than that, these clips were all shot at 25 frames per second, so we need to slide that slider down to 25 frames per second. For a quick summary of the rest of the interface, on the top right we have the export button. Obviously the image in the middle of your phone or tablet is the playback window. Here we can see the total length of the project and the current position of the playhead. At the moment it's 5 seconds, so that's the shot you're seeing on the screen. The play and pause button, the undo and redo buttons, and the full screen button. On the timeline itself, you can use your finger to scroll left and right and scrub through the footage, and you can use two fingers to pinch zoom to get more of the clips on the screen itself. So let's see the whole project. There we go, there's the whole project now displayed on the screen. A little bit of housekeeping we need to do to tidy up this timeline at the outset. Zoom in a little bit, scroll right to the end. CapCut tags on this little kind of creative CapCut type icon thing, which you may or may not want, but if you don't want it, just so we can demonstrate how to delete, tap on that clip and you can see there's a little delete icon is highlighted, and we'll just delete that now to keep our timeline nice and clean. Like I said previously, when you're curating and importing your clips, you're not bound by any of those decisions. We can tinker with it here on the timeline. So if we want to move this clip before the previous clip, tap and hold on it, and as you can see, everything compresses up. And look at that. I've now got control to move that clip. So let's just move it here. Oh, there it goes. Switches out. Job done. We've alternated the position of those two clips.
finesse our editing. We'll zoom in on the timeline so the first clip fills up as much of the space as possible, gives us more room to work with. Let's find the exact spot we want to start this clip by scrubbing with our finger here. So, okay, we don't want this at